Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forward, following nominal trajectory and developing nominal skills. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड को सेट कर दिया गया We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. 10 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात इसे भी पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण जो कि तुरंत नोदक पर आधारित चरण है, प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में द्वितीय चरण को भी सफल। Rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और सोर्सिंग फेज के बाद जारी है। Now we have a स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अब तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का पोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई
from